नमस्कार। जैसे आपको ऑलरेडी हम रिव्यू करके दिखा रहे थे स्टीव जॉब्स बाय वाल्टर स्कॉटसन। आज उससे एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूँ और भारत का कितनी इंपॉर्टेंट स्टीव जॉब्स की जिंदगी में था वो मैं आपको आज बताता हूँ। One reason Jobs was eager to make some money in early 1974 was that Robert Friedland, who had gone to India the summer before, were urging him to take his own spiritual journey there. उनका एक फ्रेंड था रॉबर्ट फ्रिडलैंड इंडिया आए थे और उन्होंने कहा था स्टीव जॉब्स आपको जाना चाहिए। तो स्टीव जॉब्स कुछ पैसे इकट्ठा किए। Friedland had studied in India with Neem Karoli Baba, महाराज जी जिनको बोलते थे नीम करोली बाबा, बड़े फेमस हैं, who had been guru to much of his 60s hippie movement. Jobs decided he should do the same and he recruited Daniel Kotak to go with him. Daniel Kotak उनकी कंपनी में बाद में डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे। He said he would turn on to the idea of enlightenment and trying to figure out who I was and how I fit into things. Kotke added that Jobs' quest seems driven partly by not knowing his birth parents. There was a hole in him, he's trying to fill it. He was mentally, मतलब स्टीव जॉब्स मेंटली इस बात के लिए हर समय तड़पते थे कि मैं अपने असली माता पिता को जानता ही नहीं हूँ। तो एक दिल में उनका होल सा बन गया था, फिजिकल नहीं, मेंटल होल बन गया था। उसको पूरा करने के लिए स्टीव जॉब्स इंडिया एक स्पिरिचुअल जर्नी में आए थे। When Jobs told the folks at the Ateri that he's quitting to go search for a guru in India, the jovial Alcon was amused. He comes in and stares at me and declares, I'm going to find my guru. I say, no, Sid, that's super. Write me. He says he wants to help and pay. I told him bullshit. And he says he wants to help pay. I tell him bullshit. Then Alcon had an idea. Atari was making kits and shipping them to Munich, where they were built into finished machines and distributed by the wholesaler in Turin. But there was a problem because the game was designed for the American rate of 60 frames per second. It was frustrating interference problem in Europe, where the rate was 50 frames per second. Alcon sketched out a fix with Jobs, then offered to pay for him to go to Europe and to implement it. It has got to be cheaper to get to India from there, he said. Jobs agreed. So Alcon sent him on his way to the exhaust station and say hi to your guru for me. तो उनकी जो बॉस थे उन्होंने उनको हेल्प किया। म्यूनिक के लिए उनकी सामान शिफ्ट हो रहा था तो उनने बोला आप इसको शिफ्ट करो और शिफ्ट करने के साथ साथ आप इंडिया जाओ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करो। आगे भी आपको और इंटरेस्टिंग कहानी इस किताब से सुनाएंगे, परंतु आज के लिए यही एक